psychology. The father of psychology, it is Sigmund Freud. The psychology, it has been derived from two Greek words, that is psychic, that is the meaning is soul, and logos, which means science. So literally it is psychology is the study of or science of soul. Now various persons have given the definitions of psychology. First, by Daniel, he defines psychology as scientific study of behavior of an individual. इंडिविजुअल का बिहेवियर जो साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं उन्हें उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू ग्यूलीफोर्ड, he defines psychology as science of mental activity of an organism. So whether it be human or any other animal or any other organism, so it is the mental activity, science of mental activity. Then according to Murthy, it is science of human behavior. Psychology is science that studies the responses which living individuals make to their environment. It is science of human behavior. Also, it studies the response living individual, living organisms का उनके environment के साथ उनके क्या response है, उसकी study को हम psychology कहते हैं. And psychology is the science of behavior and adjustment. So these are the various definitions. Next, we'll see the educational psychology. Our main concern is educational psychology. It is a branch of psychology that describes and explains the learning experience of an individual and the progress in his educational development from birth to old age. So, Crow has defined the educational psychology. Obviously, it is a branch of psychology जिसमें learning experience, एक individual का पूरा learning experience right from his birth to old age, उसने क्या educational development किया है, उसका learning experience क्या है, उसके बारे में describe और explanation देना, उसे हम educational psychology कहते हैं. Also, it is defined as study of psychological aspects of educational situation. Another definition is it is a branch of psychology which deals with teaching and learning. It takes its meaning from educational, social process and from psychology and also behavior science. So it is combination of education, social process and psychology. Next, we will see the definition of psychological trait. It is a mode of behavior or collection of certain related modes of behavior. Example, intelligence. Various collection of behavior, we call it as psychological trait. Example, intelligence. So what is the aim of educational psychology? The goal of educational psychology is to understand prediction and control of human behavior. So how the human beings will behave to certain situation, to predict it and also to control the human behavior is the goal of educational psychology. So the main aim is to furnish students with knowledge and understanding. This will help them to improve the quality of instructions. So students की knowledge और understanding को और अच्छे से उन्हें help करना, वो knowledge gain करने में, जिससे क्या हो जाएगा, उनकी quality of instruction जो होते हैं वो improve हो जाएगी. To enhance and enrich the lives of learner. Now, जब learner educational psychology, वो education अच्छा मिले, वो जो चीजें वो पढ़ रहे वो अच्छे से grasp कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो जाएगी, उनकी life अच्छे से हो जाएगी. तो इसलिए to enhance and enrich the lives of the learner, this is the aim of educational psychology. And to study group behavior, environmental adjustment, improvement of the environment. Now, group behavior, how a particular group will adjust to the environmental changes, ये इसमें study किया जाता है. So this is one of the aim of educational psychology. Then we will see the scope of educational psychology in agriculture extension. Agriculture extension में educational psychology का क्या role है? The application of psychology has a very wider area in study of human behavior. So agriculture extension, it is dealing with the farmers or human beings. So in this also educational psychology will play important role, such as first to identify nature and characteristics of learner. हम किससे कोई स्किल किसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस ग्रुप की ले रही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका नेचर क्या है, वो आइडेंटिफाई करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्प करते हैं. Then the nature of learning process. Now depending on the characteristics of learner, their learning process will depend. So it will help to identify the learner process. The principle of teaching and learning process.
how the learning process should be designed, how teaching should be designed. Then human growth and development, techniques employed in teaching, which all the techniques should be employed. Identification of personality traits like intelligence, or they have any other skills, so identify that. Then development and adjustment of psychological traits, how we can develop the intelligence of the learner. Then scientific measurement and evaluation of psychological traits like intelligence, IQ is tested. Then to value the scientific attitudes toward education, the educational significance of individual difference in rate and limit of learning. So these are the various applications of psychology in human behavior. Also the inner change that occur during the learning से एक learner में क्या बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं वो स्टडी करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करते हैं. द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स एंड लर्निंग आउटकम्स, द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस इन लर्निंग, देन रिलेटिव इफेक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ऑफ फॉर्मल लर्निंग एज कंपेयर्ड विद incidental or informal learning experience, then psychological impact upon learners attitude of sociological conditions. So these are the various applications. Then agriculture extension, it is education and its main purpose is to change the behavior of the farmers. So farmers के behavior change करने में हमें educational psychology का ये सारी applications यहाँ पे agriculture extension में काम आते हैं. Therefore, knowledge of educational psychology is useful for extension agent for understanding the factors affecting the teaching and learning process. So this is the application of educational psychology in agriculture extension. Next, importance of educational psychology. So the importance of educational psychology in agriculture extension is immense, as both disciplines deals with the human behavior in educational environment. Extension also it deals with the human behavior and also the educational psychology. So these are the reasons which explains the importance of educational psychology. It helps teachers to understand the developmental characteristics of the children. Now suppose farmer group है, ये children कहने, we can say it as the learner. वहाँ पे learner farmers हो सकते हैं, youths हो सकते हैं, रूरल वुमेन्स हो सकते हैं. तो उनके यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स क्या है वो टीचर को समझने में हेल्प करते हैं. टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग डिपेंडिंग अपॉन द psychological characteristics of the learner, we can decide the nature of classroom learning. Then it helps to understand the individual differences, helps to understand effective teaching methods. जो भी टीचिंग मेथड्स का कॉम्बिनेशन हम यूज करने वाले वो डिसाइड करने में हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रंस और वी कैन से लर्नर्स, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ, हेल्प इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, हेल्प टू मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम. जो भी लर्निंग या ट्रेनिंग का आउटकम होता है उसका मेजर करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है. Then next we'll see the role of educational psychology in agriculture extension. Now educational psychology helps extension agent to know the learner, his interest, attitudes, aptitude, level of aspiration, intelligence, interest, individual behavior in group, etc., which plays a major role in one's learning. So एक इंडिविजुअल के लर्निंग एक्टिविटी में किस चीज इनके इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए, वो समझने के लिए एक्सटेंशन एजेंट को जो हेल्प करता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट्स मेन कंसर्न इज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग. दिस हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट एंड फार्मर्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड एड्स for organizing effective learning situation and suggest the technique of learning as well as teaching. So यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है एजुकेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में टीचिंग एंड लर्निंग. So यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेशन है उसमें फॉर्मुलेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, जिससे हमें लर्नर्स या वो जिस ग्रुप को हम पढ़ाने वाले सिखाने वाले हैं उनके नॉलेज, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में, वो चाहे वो ग्रुप एक्सटेंशन एजेंट का हो या फार्मर्स का, एक्सटेंशन एजेंट को भी ट्रेनिंग दी जाती है. तो उस वक्त में उस ट्रेनिंग कंडक्ट करने टाइम में टीचिंग मेथड्स
और हम इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लर्निंग एज वेल एज टीचिंग में, उन सारे में रोल्स में एक्सप्लेन करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बड़ा रोल होता है. Then third is it helps in imparting better education by organizing subject matter of learning experience, preparation of different textbooks, development of assessment pattern, etc. for heterogeneous learners. ना एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी हम प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसमें हेट्रोजीनियस लर्नर मतलब हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, कोई सिमिलर नहीं होता. तो ऐसे सिचुएशन में लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स उनके लिए नोट्स कैसे होने, असेसमेंट पैटर्न्स कैसे होने, वो सारे डिसाइड करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्वेंटिंग लर्नर विथ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लर्नर के लिए वो एनवायरमेंट में मैच करने के लिए हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डील विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन एजेंट टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग द फार्मर्स. फार्मर्स को खुद में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एक स्किल डेवलप करने की, वो इकट्ठा आके प्रॉब्लम्स जो माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. ये बिहेवियर उनमें लाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. देन इट हेल्प्स एक्सटेंशन एजेंट टू फाइंड causes of prejudice, the habit of sticking to old practices of farming, ways of doing this, doubts and lack of confidence and factor affecting the motivation. तो एक हर एक नई स्किल नई टेक्निक अगर फार्मर्स को अडॉप्ट करना है तो वो क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो ओल्ड प्रैक्टिस पे ही क्यों स्टिक हो रही है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उनके डाउट्स क्या है, या उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, और वो मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे. वो इस सारे क्वेश्चंस को आंसर पाने के लिए educational psychology will help the extension agent. It also helps them to know the emotion and feelings of farmers, how farmer will learn the new practices. So behavior, his feeling and emotions of farmers को understand करने में educational psychology help करते हैं. Next we will have the personality. In that we will see meaning, types, factor and importance in agriculture extension. So personality word is originated from Latin word personal, which is used to mean the voice of an actor speaking through a mask. Later it came to apply to actors themselves. So definition of personality, various people have defined. Personality is sum total of individual behaviors in social situation. So अगर एक situation social situation है उसमें individual कैसे behave कर रहा है, sum total of his behavior, it is called as personality. Now personality is most comprehensive and explain different dimensions of personality in terms of traits, an adjustment of individual to his environment. Then also the other definition is it is the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine the unique adjustment to his environment. Personality as the quality of an individual is individual's total behavior. तो एक इंडिविजुअल के अंदर साइकोलॉजिकल सिस्टम का ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गिवन सिचुएशन में वो कैसे एडजस्ट होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, तो दिस इज द पर्सनैलिटी, सम टोटल ऑफ बिहेवियर. अदर डेफिनेशन आर इट कंप्रोमाइजेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हिज नॉलेज, स्किल, टेम्परामेंट, एटीट्यूड, हैबिट्स, कैरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेट्स. In short, personality is sum total of ways in which individual reacts to and interacts with the other. एक सिचुएशन को वो कैसे रिएक्ट करता है और दूसरे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कैसे करता है, उसका ये सम टोटल है, यानी कि उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी. Then types of personality. We have extrovert, introvert and ambivert. Extrovert is socially adaptable and interested in people. He will adapt easily in society and he is interested in people. That is, he likes to talk. He likes to make friends and very soon create the circle of friends around him. He likes to explore. He likes to talk to people. He likes to make the company. So he prefers working in company with other people and is talkative and fond of talking. He is self-assertive and generally takes things lightly. So he likes to mix up in the society. He likes to be the part of society. He never feels embarrassed. He has keen sense of observation and is attentive. So reformers and social workers are generally
एक्सट्रोवर्ट्स। तो वो बहुत ऑब्जर्वेशन कीन ऑब्जर्वेशन एक्सट्रोवर्ट पर इंडिविजुअल है, तो उसके कीन ऑब्जर्वेशन रखता है और ही इज वेरी अटेंटिव। नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोवर्ट, and it is opposite of extrovert. An introvert limits his acquaintance to few, so he don't like to mix with everyone. He is very he has very few friends. He is very particular. He very we can say ऐसे बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं उसके, और वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप का है. दिस पर्सन इज वेरी कंजर्वेटिव एंड सस्पिशियस ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर्स. He is not social and prefers to remain in the background on certain occasion. उसे अकेला रहना पसंद होता है. He avoids embarrassment and public speaking. He is very reserved, self-centered, introspective, absent-minded, remains worried and is always daydreaming. He is generally slow and hesitant to take the initiative. Philosopher, poets, scientists are generally introverts. So वो ज्यादा interact करने में नहीं believe करते, वो अकेले रहने में, और they will be self-centered, reserved type. Then ambivert, it is types that are placed between extrovert and introvert. ना ही ज्यादा लोगों को मिलना पसंद करता है, ना ही बहुत कम. They are the balanced behavior. Their behavior is balanced. Their psychic energy is partially directed inwards and partly outwards. They are interested in their own thoughts and emotions, and also in other persons and their actions. Most of us belong to ambivert type. That is, in few situations we try to behave as extrovert, and in few situations we be the introvert. Then factors affecting the personality. An adult personality is generally considered to be made up of hereditary and environmental factors and moderated by the situational conditions. So hereditary things से भी personality affect होती है एक adult से की, और environmental factors की भी, और सिचुएशनल कंडीशंस, इस तीन चीजों पे पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डिपेंड होती है. ना फर्स्ट विल सी द हेरिडिटी. ना पर्सनालिटी हैज कनेक्शन विद हेरिडिटी एज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर इज हेरिडिटरी इन नेचर. द नर्वस सिस्टम, द डक्टलेस गैंड, द ऑर्गेनिक ड्राइव्स, द इमोशन एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ मेंटल बिहेवियर may lead to differences in the personality. Now, hereditary influence upon the personality may be both direct or indirect. Hereditary direct impact होता है, indirect. Now, indirect influence are exerted through group evaluation of genetic trait. Direct influence come from degree of emotional drive and mental alertness. For example, if you are relaxed and easygoing child, it would be result of your genes, and it would not be possible for you to change those characteristics. But personality characteristics are not completely dictated by heredity. We can't say that completely hereditary will judge our personality. Some part of genes, genetical traits will result our personality, but physical environment or type other factors will also affect our personality. Now, physical and environmental character. Food and climate are most significant aspects of the physical environment as they influence the biological development such as personality. Now, environment to which we are exposed plays a substantial role in shaping our personalities. हमारे आजू बाजू का क्लाइमेट, हम किसके साथ सराउंडेड है, उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी होती है. Then types of culture. Culture establishes norms, attitudes and values that are passed along one generation to next and create consistencies over the time. Now, environmental factors that exerts pressure on our personality formation are the culture in which we are raised, our early conditioning, the norms among our family, friends, social groups, social interaction, and that we have experienced will decide our personality. ना जो भी हम कल्चर है, हमारे फैमिली के रूल्स, हम सोशल इंटरेक्शन में कैसे बिहेव करते हैं, हमारे फैमिली में क्या सिखाया गया, हमारे कल्चर में क्या सिखाया गया, उसके आधारित पे हमारी पर्सनालिटी होती है. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. Now, individual personality centers on the concept of identity formation. As child develops, he imitates the personality characteristic of those to him. If he matures properly, he will get integrated his characteristics and achieve the sense of identity. एक छोटा बच्चा है, वो आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही वो बिहेव करता है, वो ही पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वो अडॉप्ट करता है. जैसे वो मैच्योर्ड होता है, he will integrate this characteristics and he will achieve his own identity.
Ideas, habits, values, motives are the integral part of personality and are adopted through the process of interaction. Then we'll see the role of personality in agriculture extension. The knowledge of human personality enables the extension agent to judge and follow the method of guiding by selecting suitable teaching methods. So जो भी अब लर्नर का ग्रुप होगा उस लर्नर ग्रुप में ह्यूमन पर्सनालिटी कैसी है उसके आधारित पे एक्सटेंशन एजेंट जज करेगा कि उसे किस वे में टीच करना है, कौन से टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करना है. This helps extension agent to properly plan the educational program to accomplish the objectives of desirable change in farmers. तो फार्मर की पर्सनालिटी कैसे उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए जाते हैं जिससे हमें डिजायरेबल चेंज अचीव हो जाए. By studying the personality of farmer, extension agent can understand the values and value system of its client and proceed his work accordingly. अगर एक फार्मर की पर्सनालिटी एजेंट स्टडी कर रहा है तो उससे क्या उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके कल्चर क्या है वो समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम वो प्लान करेगा. सो इससे क्या हो जाएगा रिजल्ट और बेहतरीन आएगा. By studying the personality of particular farmer, extension agent can get clear idea about his various traits such as sociability. सोसाइटी में उसका रोल क्या है वो समझने में आसानी होती है. If person found with this trait, then he can be used as a key communicator to promote the developmental activities in particular village. For example, एक फार्मर की पर्सनैलिटी एक लीडरशिप जैसे तो उसे हम की कम्युनिकेटर तो हमारा मैसेज और लोगों के पास करने में उसे हम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली फार्मर विद ट्रेट्स ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी एंड जनरसिटी कैन बी एंगेज्ड इन ट्रस्टवर्दी वर्क्स लाइक सीड डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर कोई फार्मर की पर्सनैलिटी ही इज वेरी लॉयल, ही इज ऑनेस्ट, सो उसमें हम उसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हो लाइक सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम उसे एंगेज कर सकते हैं. Then extension workers should get into deep study of knowing the capacities, types and traits of personality of his clients, that is farmers. Farmers की personality, उसकी capacity क्या है, वो किस type की personality, ये सारे उसे plan deep study करने चाहिए in order to plan and educate them. अगर वो उनकी personality अच्छे से study कर पाए तो ही एक अच्छा extension program वो develop कर सकता है और उसके results भी अच्छे होंगे. This also helps extension worker to select सुटेबल फार्मर फॉर सर्टन पर्पज. मतलब एक की कम्युनिकेटर कौन होगा, लीडर कौन होगा, तो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है. द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पीपल एनेबल्स एक्सटेंशन वर्कर टू जज एंड फॉलो द मेथड ऑफ गाइडिंग बाय सिलेक्टिंग सुटेबल टीचिंग मेथड. दिस एनेबल्स एक्सटेंशन वर्कर टू प्रॉपरली प्लान द प्रोग्राम टू एडवाइज फार्मर फॉर डिजायरेबल चेंजेस इन द रूरल कम्युनिटीज. देन नेक्स्ट वी हैव टीचिंग. Extension teaching is a process of creating situations that facilitate the learning process. So learning process facilitate करने के लिए situation create करना उसे हम extension teaching कहते हैं. In other words, arranging situation in which the things to be learned are brought to the attention of learners, their interest is developed, desire aroused, and conviction is created, action is promoted, so and satisfaction is ensured. So this is the process of extension teaching. Then characteristics of teaching. The ultimate purpose of teaching is not merely to inform people but to transform them to bring about the desired changes in their. Teaching का एम क्या होता है? Desired change लाना. एक ह्यूमन बीइंग में desired change लाना ये टीचिंग का एम होता है. So ये अचीव करना ये कैरेक्टरिस्टिक है. If learner has not learned, the teacher has not taught. So एक लर्नर ने कुछ नहीं सीखा उसका मतलब क्या है? एक टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया. Then teaching is not filling a bucket; it is lighting the lamp. It is not like we are just filling the information in the brain, but we have to give him information such that he will pass it to some other persons, and such the knowledge will transfer from one hand to other hand. And teaching is an intentional, purposeful process, not misundertaking. ये planned process होता है. Effective teaching is done according to design, not drift. If it is done by plan, not by trial and error, that is एक इफेक्टिव टीचिंग जो होता है वो इसके एक फिक्स डिजाइन रहता है, फिक्स्ड प्लान रहता है. अगर ट्रायल एंड एरर पे हम करने लगे टीचिंग तो इट इज नॉट द इफेक्टिव टीचिंग. गुड टीचिंग therefore requires careful planning of content, procedure, methods and techniques.
Also, good teaching is essentially a good communication, and good communication requires sympathetic sharing and clear explaining. Then we'll see about learning. Learning is process by which persons becomes changed in his behavior through self activity. Individual से behavior में change ला रहा है through his self activities, that is called as the process of learning. So learning is process of progressive behavior adaptation. Any change of behavior which takes place as a result of experience, we called it as learning. So learning is something that takes place within the learner. These are the characteristics of learning. It takes place within the individual when he feels a need, strives for fulfilling it, and experiences satisfaction with the fruits of his labor. So learning कब होते हैं? जब एक इंडिविजुअल को कुछ सीखने की उसकी नीड हो, he strives, that is he works hard, and from that he gets the experience. So that is, and when the learning will takes place. Learning is the goal of teaching. So these are the characteristics of learning. Then learning experience, it is a mental or physical reaction one makes through seeing, hearing, or doing the things to be learned, through which one gains meaning and understand the material to be learned. अगर कोई एक्टिविटी उनको सीखनी है तो उनसे वो सुन के, देख के, करके वो उस चीज को लर्न करते हैं, तो उसे हम लर्निंग एक्सपीरियंस कहते हैं. लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. लर्नर हैज टू बी वेरी एक्टिव इन लर्निंग प्रोसेस. Then learning situation, it is a condition or environment in which all elements necessary for promoting learning are present. That is instructor, that is who is going to teach, learner जो पढ़ने वाला है, subject matter, the what thing he is going to learn, teaching material and equipments and physical facilities. So जिस environment में ये सब चीजें होती है तो उसे हम learning situation कहते हैं. Then elements of learning situation, one is skillful extension worker और instructor. Instructor skillful होना है, वो उससे खुद पहले वो skill आनी चाहिए. Then farmer और learner who want and need to learn, जिसे कोई कुछ सीखने की इच्छा है और जिसकी जरूरत है. Then this is the second element. Then subject matter in line with the needs and abilities of the learner. Learner की abilities and needs क्या है, उसके according की subject matter अगर हुआ तो लर्निंग सिचुएशन का एलिमेंट होता है. देन टीचिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल एंड फिजिकल अरेंजमेंट. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन. It is learner is at the center. Then he will see the subject matter, physical facilities, teaching equipment, instructor. So this is the element of the learning process, and learner will be always at the center in the learning situation. Then characteristics of elements of learning instructor. So first element is instructor. तो instructor के characters क्या होने चाहिए? उसके मन में objective clear होनी चाहिए. He should know the subject matter very well and he should organize it. He should be enthusiastic and interested in the subject. वो पढ़ाने में interested होना चाहिए, वो enthusiastic होना चाहिए. He must be able to communicate with learners. He should be democratic in his leadership. Allow student participation, and also he should ask the students to take part in the learning process. He should be well prepared. He should be friendly. Then he should use the teaching plan. He should speak so that all can hear. He should set a good example of good leader and teacher. He should be skillful in use of teaching material. जो भी teaching materials and equipments है उसे अच्छे से use करने आने चाहिए. Then learner, he have need for information. उससे वो information gain करने की जरूरत होनी चाहिए. He should be interested. He should be capable of learning and use the information gain. जो भी information वो learning process में gain करेगा उसे वो use करनी चाहिए. Then subject matter of content, it should be related to learner's need. अगर वो learner के need according नहीं हुआ तो learner interested नहीं होगा. So it should be always related to learner's need. It should be applicable to real life situation, taught at intellectual level of learners, well organized and can be logically presented. It should be presented clearly, challenging and satisfying and significant to the learners, fits to overall objectives. Then in physical facilities we have free from outside distraction. जो भी learning situation है, ये classroom है जहाँ वहाँ पे outside distractions नहीं होनी चाहिए.
environment should be comfortable, that is temperature should be comfortable, well lighted, adequate space for a group, comfortable furniture and well arranged. And lastly, teaching equipments and supplies. So it should meet the needs effectively, readily available, and each item should be used skillfully. So these are the various characteristics of element of learning situation. Then steps in extension teaching. First, we'll get the attention of the learner. Then stimulate the learner's interest. एक अगर कोई स्किल हमें सिखानी है तो उस स्किल के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करनी पड़ती है. बाद में पहले स्किल के अटेंशन, ये स्किल है ऐसे, we should seek the attention of the learner. Then we have to develop the interest among the learners. Then increase the learner's desire for information. उनमें वो इच्छा होनी चाहिए, डेवलप करनी है. Extension agent should develop the interest of his desire to learn this skill. Then they should convince the learner about that. Then getting action by the learner, and then satisfaction of the learner. So these are the steps in extension teaching. So these are getting attention. How we can get the attention? First, people must know that new idea, जो भी new idea है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. They can use at this mass media like radio, TV, exhibitions can be used. Then stimulating the learner's interest. In this, they can use personal contact by extension agent, contact through local leaders, farm publications, radio, TV. So interest develop करने में help second stage होते. Then desire for information. अगर वो बार बार वो न्यूज़पेपर और टीवी में अगर हम कोई एड देख रहे हैं कि कोई न्यू स्किल देख रहे हैं तो उसके बारे में वो और इंफॉर्मेशन, ऑडियंस क्या करते हैं, वो और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. सो वो उनमें डिजायर डेवलप करनी चाहिए, वो थर्ड स्टेज है. देन फोर्थ इज कन्विंसिंग द लर्नर फॉर द एक्शन. वंस दे नो द स्किल, वंस दे गेट द डिजायर टू लर्न, सो देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन एजेंट शुड give he should convince them why this learning this skill is important. So he can do it by field day or farmers day, slide show, personal contact, then training. So these are various activities conducted in this stage. Next, getting action by the learner. Here the learner को वो skills सिखा के उन्हें खुद करने के लिए encourage करना, like demonstration conduct करना. So demonstration, personal contact, supply of critical inputs, essential service provide करना. इससे हम learner को वो skill practice करने में help करते हैं. So that is getting action by the learner. And then making sure that learner obtains satisfaction from his action. जो भी वो skill को learn करते हैं, उस skill को employ करके, वो skill को वो adopt करके उससे satisfaction मिल रहा है. ये sixth stage of extension.